Hello everyone, so welcome back to my channel. Today we're going to discuss some theory questions from business stats that had come in the home examination for past 10 years. So let's get started. The very first question is, differentiate between statistical independent and mutually exclusive events. So स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जिनके एक इवेंट के अकरेंस पे दूसरे इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो एक साथ अकर हो ही नहीं सकते. Definition, let's see. Two events are independent if occurrence of one event does not affect the probability of the other event. And mutually exclusive events, two events are mutually exclusive if they cannot occur simultaneously. So the formula for statistical independent event is probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. For mutually exclusive, it's 0 because they cannot happen together. Simultaneous occurrence. So in statistical independent event, both can occur at the same time, but in mutually exclusive event, they cannot occur at the same time. Impact on probability. So the occurrence of one event has no impact on the probability of other event in statistical independent event, but in mutually exclusive, the occurrence of one event prevent the occurrence of other events. For example, when you flip two coins, the outcome of one coin does not affect the outcome of other coin. So this is the example of statistical independent event. But when you roll a dice, getting 1 and getting 2 are mutually exclusive because you cannot get 1 and 2 both at a time. So it's a mutually exclusive event. So key characteristics is the probability product rule is applied in statistical independent event because the probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. But for mutually exclusive, probability of intersection is 0. Moving to the second question, list and briefly describe the criteria of a good estimator. So these are the criteria for a good estimator that are unbiased, consistent, efficient and sufficient. Unbiased कब कहा जाएगा जब उनकी expected value जो होती है वो equal होगी true value of the population parameter. Consistent कब कहा जाएगा कि जैसे जैसे आपकी sample size बढ़ रही है जो आपका आंसर होगा वो closer होगा true parameter value के. और efficient कब कहा जाएगा among all the unbiased estimators. more efficient कब कहा जाएगा जिसकी smallest variance होगी. और सफिशिएंट कब कहा जाएगा जब वो एक एस्टिमेटर सारे इंफॉर्मेशन सारे डेटा जो कि रिलेवेंट है एक पैरामीटर को एस्टिमेट करने में उनका यूज करेगा तब वो सफिशिएंट कहा जाएगा. लेट्स सी द डेफिनेशंस. अनबायस्ड कब होता है? एन एस्टिमेटर इज अनबायस्ड इफ इट्स expected value equals to the true value of the population parameter. In other words, on average, it correctly estimates the parameter. Consistency, a consistent estimator becomes closer to the true parameter value as the sample size increases. The probability of the estimate become accurate improves with more data. Efficiency, among all unbiased estimator, the most efficient estimator has the smallest variance. It provides the most precise estimate of the parameter with the least variability. Sufficiency, an estimator is sufficient if it uses all the information in the data relevant to the estimating parameter and no other estimator should provide more information. Moving to the next question, that is state the characteristics of T distribution. So basically T distribution को हम student T distribution भी कहते हैं और ये कॉमनली हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन में यूज होता है. और कब होता है? जब सैंपल साइज आपका छोटा हो और स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी पॉपुलेशन का हमें ना पता हो तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं. सो लेट्स सी द टी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो नोन एज स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन that is commonly used in hypothesis testing and confidence interval estimation when the sample size is small and the population standard deviation is unknown. So key characteristics क्या होती है? Symmetry होती है just like the normal distribution. T distribution भी symmetric होती है around the mean but are heavier with tails. Mean T distribution का भी 0 होता है as just like the standard normal distribution. Shape as like the normal distribution bell shaped होती है but fatter होती है tails पर. और this indicates that the higher probability of extreme value. So symmetry का मतलब होता है that T distribution is symmetric around the mean, similar to the normal distribution but with heavier tails. The mean of the T distribution is 0, just like the standard normal distribution. The shape of T distribution is bell shape, but it's fatter tails than the normal distribution. This indicates that there is a higher probability of extreme values. Degree of freedom, for calculating T distribution we have to find degree of freedom. Degree of freedom का formula होता है sample size minus 1. So the shape of T distribution depends on the degree of freedom. The degree of freedom are typically equal to the sample size minus 1. As the degree of freedom increases, the T distribution approaches normal distribution. Variance, आपका जो variance होता है T distribution का is greater than 1 and decreases as the degree of freedom increase.
इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे जैसे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा आपका वेरिएंसेस वैसे ही कम होगा. So for very large degree of freedom the variance approaches that of the normal distribution which is 1. यूजेस हम कब यूज करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, जब सैम्पल साइज आपका छोटा हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ना पता हो उस पॉपुलेशन का. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टी टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. Now the fourth question is distinguish between simple and random simple random sampling and stratified sampling. So simple random sampling क्या होता है, जिसमें पॉपुलेशन किसी भी एक पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स है उनका इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ये आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है. स्ट्रैटिफाइड में वी डिवाइड द पॉपुलेशन इन सम ग्रुप्स. स्ट्रैटिफाइड मतलब स्ट्रैटा, वी डिवाइड इट इनटू सब ग्रुप्स एंड देन वी कैलकुलेट द probabilities of the population. So let's see. A sampling method where each member of the population has an equal chance of being selected is simple random sampling, and a sampling method where the population is divided into the distinct subgroups strata and a random samples are drawn from each stratum is called stratified sampling. So सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कोई भी प्रायर डिवीजन नहीं होता है, सैम्पलिंग एंटायर पॉपुलेशन से ही किया जाता है एज अ होल. बस सेट्रिफाइड में आपका सेट्रा में डिवाइड होता है, मतलब इन ग्रुप्स लाइक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द एज, इनकम, जेंडर, इसके बेस पे आप पहले पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं एंड देन वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज. सैम्पल सिलेक्शन आपका रैंडम होता है फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और ईच मेंबर का प्रोबेबिलिटी सेम होता है ऑफ सिलेक्शन. बस सेट्रिफाइड में रैंडम सिलेक्शन विद इन ईच स्टेट्रम to ensure that each subgroup is represented in the sample. Purpose क्या होता है? To obtain the representative sample from a whole population, assuming that population is homogeneous. But stratified का purpose क्या होता है? To ensure the representation of specific subgroups within the population, especially when there are significant differences between the groups. Now complexity आपका जो simple sampling होता है वो simple implement करने में होता है और manage करने के लिए भी, but stratified आपका more complex होता है as it requires identifying and dividing the population into strata. Accuracy आपका simple में can lead to higher variability if the population is diverse, और आपका stratified more accurate होता है. Example just random selecting 50 students from a school of 500 student, ये आपका simple sampling हो सकता है. पर dividing the school into grades and then randomly selecting student from each grade to ensure all grades are represented, ये आपका stratified होता है because we have created a group in this. So this is all in this video. Thank you and please do subscribe the video.